Bismillahirrahmanirrahim. Good evening. Hello. Assalamu alaikum. My name is Idrees, and keep me company in this short program, Friday Night Gupshup, is Brother Sair Ali. Assalamu alaikum, Sair. वालेकुम How are अस्सलाम you? वालेकुम अस्सलाम थैंक यू सो मच इदरीस कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का दुआएं आपकी बहुत बिजी रहे हैं आप? जी तकरीबन 2-3 महीने से कैंपेन भी चल रही थी उस वजह से भी बिजी थे इसके जी अलावा जी अपने हाँ, थोड़े बहुत काम थे कैंपेन मैनेजर रहे हैं आप? कैंपेन मैनेजर भी आप समझ ले और दूसरा ये कि हम साथ दे रहे थे जो आज हमारे गेस्ट भी हैं इंशाल्लाह उनके साथ उनका भी आपके साथ तारुफ करवाएंगे भी So, viewers, thank you for tuning in on our Facebook page and groups this evening. My name is Idris, and as I said, Sarali, who is one of our presenters and also a local reporter for a news channel here as well. We'll be speaking to some studio guests as well who are sitting in our green room currently virtually, and so we're going to go to them. But do please share the live if you're watching. Assalamu alaikum. Welcome to you. If you have any comments, then please do drop us a message. Aman found something very funny. Aman is saying, Assalamu alaikum to you and welcome to the show. So if you drop us a message from, if you're in any of the groups, then make sure you give the permission to Facebook so we can bring your comments on the air. And if you're watching on the page, then that's fine. You don't need to give any permission. So, Sir, who do we have today? कौन किस किस को आपने दावत दी आज? आज हमारे साथ जो इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे सबसे पहले मैं तो कंग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा मुबीन मेहदी साहब जो कि रिसेंटली इलेक्ट हुए हैं एज अ प्रेसिडेंट नॉर्थ ईस्ट पीटीआई की तरफ से जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे उसमें उनको कामयाबी हासिल हुई उसको इनवाइट किया गया है और साथ में हमारे साथ हमारे जो प्रेजेंटर है जो मेरे ख्याल से 3 दिन प्रोग्राम करते हैं वसीम गिलानी साहब वो भी मौजूद होंगे और साथ में अली भाई हमें अभी थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे Gigi, inshallah, we'll be speaking to our guests very shortly. So, firstly, we want to offer a warm welcome to the newly elected president of the Northeast PTI chapter here in the United Kingdom, Mubin Mehdi Saab. Assalamu alaikum, and a warm welcome to you. Walaikum salam, Idris bhai, Saad bhai. Thank you very much for inviting me, and it's a pleasure to be on air and talk to you today. So, Mubin sir, you've been campaigning very hard over the last several months, and just a brief feedback for our viewers this evening. How was the campaign for you, and did you achieve the mission that you set out to do 6-7 months ago? First of all, I would like to congratulate my team and all those who voted for me. And I would also like to congratulate the opposing Nazariati team because they put up a good fight. We both achieved record numbers, and we have put the Northeast on the map. We've now gained recognition. In the past, I think we've been somehow ignored. All the activity has been in the south and very little up north. And with our efforts, both the Pak Watan and Nazariati, I think we've sort of created an awareness and notice, and hopefully going forward we should be a force, and in fact indeed we will be, and we've had many good wish messages and congratulations from all over the country, and I'm proud of our area, all our PTI Northeast members, irrespective of whether they are Pak Watan or Nazariati. Well done, and I'm very proud, and let's now join hands and forces and achieve something. Because my whole purpose of entering PTI and I think my own team was so that we can take some action, address our problems of all the overseas Pakistanis, get recognition at the government level, which to date, other than a vehicle for fundraising, there's been very little achieved by PTI in the UK.
Whether it's not entirely up to you, the Pakistan government or PTI in Islamabad, but I think a lot of that has also to do with the local people who've been running the show at UK level. Talking about, unfortunately, they've been ineffective. Talking about, and what's happened in the past is the past. This is a new chapter. Yes. How are you? Obviously, now the panels have dissolved. The purpose of the panels was to elect the leadership team in the Northeast. They are dissolved, so there is no panels at the minute. You are all members of all PTI Northeast. There's no panels. As the newly elected president, what are you going to do to unite the membership? Because I looking at it from on the outside, I felt there was some frictions between the panels. So I think it's your job and your duty to bring the whole camp together and pull in one direction. How are you going to achieve that? Okay. Well, first of all, as I put out a message last week on Facebook and also on my groups, that whoever wins should lead and everybody should back him. And I stated that if I lose, I will be right behind the winner and support him in every which way we can. And I expect, and in fact, I've had words with the other party. They have congratulated me, and they've also, some of the members have vowed to support me in what is a common cause, and that's PTI Northeast. And there is no Nazariati now, there's no Pak Watan now, it's PTI Northeast. And I would welcome प्रेसिडेंट आप माशाल्लाह अभी इलेक्ट हो चुके हैं. बीइंग अ प्रेसिडेंट, आप अपनी कम्युनिटी के लिए कौन सा ऐसा कदम उठाएंगे? क्योंकि पिछले 10 सालों से यही इलेक्शन होते आ रहे हैं, फंडिंग होती रही है, कोई मकसद नहीं है, सब ओवरसीज वही अपने मसले मसाइल में गिरे हुए हैं. आपने क्या कोई लाएअमल तैयार किया है उसके लिए? जी, obviously, as I said at the beginning, one of the reasons for coming forward is not to just win an election here and have parties and take photographs and get a bit of publicity and be totally ineffective. I've noticed that it's not just the Northeast, but more or less the whole country, the UK, PTI leadership and members have not really achieved anything tangible. And I felt that I can only do something or have my say if I become part of the team. And I think I've achieved my first objective. My next one here is to try and sort out and unite everybody in the Northeast. And that, despite what my people and what the rumors are, I can tell you now, please, everybody, the election was done in good spirit. Okay, we have banters against each other. We try and win each other's votes. But end of the day, all the votes, all the members, right, were supporting PTI Northeast and supporting Imran Khan's vision. Now, once I've done that, my next step will be, because we've got a major share of votes in the UK, just so that everybody, the listeners, are aware, we achieved the third highest vote count in the country, which is unbelievable, because if you look at the population in the Northeast, we've got, I don't know, about 25,000 to 30,000 Pakistanis living in here. As compared to, look at London, which is in hundreds of thousands of people, we got more votes than them. The only two regions that beat us was the Manchester area. That includes Manchester, Bolton, Rochdale, Liverpool, Blackburn, Burnley, all those cities. And we were very close to them. And even then, in those cities... मुबीन साहब, मैं कुछ और सवाल पूछ रहा हूँ. हाँ जी, बोले. बेशक 1 लाख तक मेंबरशिप चली जाए, फायदा तो पार्टी, आप फायदा तो उनको दे रहे हैं ना, यहाँ पर इसके लिए क्या फायदा? अच्छा, उसके हवाले से पहली तो बात यह है कि I'm looking at it nationally, right, the whole of the overseas community, and the only way to make a difference from our chapter or from the Northeast was to be a major force in this, and so that we have a say and people treat us with importance, right? Okay. So with the weight and the membership and everything out, and as a president,
I will be fighting not only for the Northeast, which naturally I will also make my voice known towards and let people know all the problems we've got and how best we should address them. Okay, on the local level, I have obviously a strong team. I will involve other people. I will form a committee. We'll have regular sessions. We will have debates. We will have a think tank. We'll look at the problems of Kashmir. वसीम साहब हमारे साथ है. वसीम साहब एक मिनट. वसीम साहब आपने मुबीन साहब की बातें भी सुनी. हर किसी से कोई सवाल करता है तो वो यही जवाब उसका यही होता है कि इमरान खान के विजन को आगे लेकर जाएंगे. ये विजन है क्या आपके ख्याल में? क्योंकि आप भी काफी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में काफी आप एक्टिव है, तो उस हवाले से मैं पूछ रहा हूँ. आपका माइक जो है कि आप लोगों ने मुझे ठीक है अभी आवाज आ रही है. आवाज आ रही है जी, आ रही है. सो सबसे पहले आई जस्ट वांट टू कांग्रेट मुबीन साहब से कि वो प्रेसिडेंट मुंतखब हुए हैं. बहुत बहुत मुबारक हो उनको. सो कांग्रेचुलेशंस, आप मुंतखब हुए. और जैसा कि साहिर भाई ने पूछा, साहिर साहब ने कहा, अभी तो फिलहाल पाकिस्तानी सियासत में खान साहब का अपना विजन थोड़ा सा ब्लर है. Tomorrow he is going to have a vote of confidence from the assembly. After that, let's see what happen. और देखें कि क्या बनता है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में. और मैं बल्कि पिछले दिनों यही सोच रहा था कि पाकिस्तान में क्रिकेट टीम से लेके असेंबली तक या सेनेट तक लोगों का रुझान बदलते देर नहीं लगती. और जैसे कि मुबीन साहब माशाल्लाह से इलेक्ट हो चुके हैं प्रेसिडेंट, और मैं अगर इनको पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत क्लियर, साफ, स्ट्रेट फॉरवर्ड और खूबसूरत सोच के मालिक हैं. लेकिन व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, वहां पे थोड़ा सा आपको सही पॉलिटिकली बिहेव करना पड़ता है to achieve your goals, to get out of क्या कहते हैं, जो आपके जिस तरह की इनकी सोच है. और मुबीन साहब की जो विजन था, जो मेरे भी प्रोग्राम में इन्होंने हमारे पूरे सुनने वालों के साथ शेयर किया था, इट्स नॉट गोना बी सो इजी कि जो यहाँ के यूके के लोगों के लिए करना चाहते हैं वो पाकिस्तान से इट्स नॉट गोना बी इजी व्हाट आई फोरकास्ट. सो मुबीन साहब क्या देखते हैं आप? हम मुबीन साहब की तरफ थोड़ी देर में जाएंगे. एक दो कमेंट आ रहे हैं, ये भी शामिल करते हैं. तो हमारे भाई मकसूद हुसैन साहब शायद ये मिडिल ईस्ट में है, तो वो कहते हैं कंग्रेट्स मिस्टर मुबीन. और एक दो और कमेंट आ रहे हैं. नासिर हुसैन साहब हैं, वो भी सलाम पेश कर रहे हैं. वालेकुम अस्सलाम नासिर भाई, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन. And he is saying now it's time for unity. Well done to PTI Northeast members. Let's now focus on on what really matters. जी. तो एक दूसरे जी इनका भी शामिल करते हैं कि ये भी कर ले. एक इशू था. कह रहे हैं कि he spent £1,000 to purchase membership. That's proved. Okay, ये मुबीन साहब से सवाल कर रहे हैं वो. ठीक है. So he said he's making PTI टंगा पार्टी इन यूके. ये तो मुबीन साहब को आंसर करना चाहिए. So मुबीन साहब, how many thousands of pounds have you spent on getting membership for the party members for them to vote for you? Is that true? Because मैं थोड़ी वजाहत कर दूं, सदीक दारी जो है ये मुबीन साहब से ही हारे हैं. अच्छा जी, अपोजिशन पार्टी डिफेंडर है. हाँ जी, तो सॉरी वो अपोजिशन नहीं, एक पार्टी तो एक ही है ना. मुबीन साहब को मैं म्यूट करता हूँ. 1 मिनट है ना साहब, एक मिनट मुबीन साहब. तो इनका सदीक दारी साहब इज फ्रॉम द नजरियाती पैनल. फ्रॉम नजरियाती पैनल न्यूकासल से इनका ताल्लुक है. और अच्छी बात ये है कि यहाँ ये नजरियाती पार्टी जो है उसके हवाले से मैं थोड़ा कहना चाहूंगा कि जो नजरियाती टीम है वो कहीं नजर नहीं आ रही. ठीक है, वो बैक पर है. वो नहीं इनको भी इनवाइट दी प्रोग्राम पर. नहीं, मैं मुबीन साहब की बात पे आ रहा हूँ कि मैं पार्टी को यूनाइट कर रहा हूँ. तो ये आपके वो यूनाइटेड पार्टी है जो आप कह रहे हैं कि मैं इनको साथ लेकर जाऊंगा. ये वो खुद इल्जामात लगा रहे हैं कि मेंबरशिप के लिए आपने पैसे लगाए हैं. तो इसका आप जवाब खुद देंगे मुबीन साहब. is there any truth? First of all, he is a bad loser. I can prove
and I have evidence of the number of people that Nazarati people have paid for themselves. So let's not go into that. If he's got an issue, I'm available, and let him prove and talk to me. And he's the same guy last year set up a meeting in Sindh claiming to be General Secretary of PTI Northeast, right? So I'm also aware of that. And I'm also aware of some of the other things that have been going around. But I think I'm willing to move forward and bring everybody together. And I think his intentions are wrong right to start with. And I don't think he has any intentions of unity. And I'm very disappointed in this man. And I've heard similar rumors about him before, but I'm willing to move on and talk together. So if he wants to sort of get into this dirty, mucky business, then I'm available, and I know where he is as well. I'm happy to go and see him and talk to him, because I'm trying to bring everybody together. So you think he's a sore loser, and there's no Yes, he's a bad loser. There's no truth in his allegations. No. And I also got proof of all the things that have been going on with Nazati, but I wasn't going to go I have a into this. suggestion for Mr. Sadiq Saab. I'm sure the PTI nationally will have protocols and procedures in place for any wrongdoing. So That's right. maybe you should put a formal complaint in if you feel so obliged to do so. Well, first he'll have to tell me on what basis he claimed himself to be the General Secretary of PTI of UK last year in Sindh. Right? Yeah. Then there are other things that I'll come into, and we'll address that. That's for another day and another matter. I was trying to be very friendly, trying to bring them together with open arms, but it appears to me that some of these people, are not interested in unity, not interested in running together for a common cause. And I made my message quite clear. And it appears to me there are some people that will never learn. And, they have to be addressed differently. So it seems like, looking from my point of view, you got a really uphill battle, because the camp seems... Sorry. Listen, he's one out of thousands in here. He has no following. Basically, he's a gentleman from Interior Sindh, but I'm told, and he's got support from throughout the country, but because he was part of the Nazarati team. I don't think one person cannot spoil what is a very good situation we've got in the Northeast. Thousands and thousands, people interested. We've created more interest PTI than ever before. We made record number of members. We have never exceeded by any one party more than about, last year it was 167, of which I personally brought 50% for Nazarati team. So they've never exceeded more than 70-80 members. हम आपको appreciate करते हैं कि आपने membership को 1413 तक अगर free membership अरे वो बढ़ेंगे ना. हाँ इदरीस साहब जी आप भी अपना राय देना प्लीज. इदरीस साहब मैं इस वक्त ये ऐड करना चाहूंगा कि दिस इज द राइट टाइम फॉर मुबीन साहब कि जितनी बातें लोग कर रहे हैं, नाउ ही इज द प्रेसिडेंट, तो आने वाले वक्त में ही कैन प्रूव देम रॉन्ग कि जी ये बातें सारी गलत थी. और अब मतलब दिस इज हाउ यू कैन प्रूव फॉर द कमिंग टाइम पीरियड कि आप क्या प्लान करते हैं, कैसे सेट करते हैं. और इन लोगों को आप जैसे अभी बयान कर रहे हैं कि झूठ कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, सो यू कैन नाउ यू हैव गॉट द टाइम, दिस इज द अपॉर्चुनिटी यू हैव गॉट. तो आप इनको सारों को झूठा या जो भी व्हाटएवर योर स्टैंस इज, you can prove it right now. That is exactly मेरे ख्याल में it's जी I intend to do that. But I think the best way forward, rather than calling somebody juta, let's try and prove them wrong, that they had a wrong opinion. Let us do something. Let us achieve. And I'm giving an opportunity for this guy to join forces with me. But like I said, some people are bad losers, and I can't do anything about that. I will be open. आपको खुले दिल से बिल्कुल यही मैं कहना चाह रहा हूँ जी. वही ना कि इस तरह के तो लोग आपको अपोज करते रहेंगे, मतलब चाहे वो यहाँ की सियासत हो या पाकिस्तान की सियासत हो. नहीं वो तो है, वो तो हमारे लीडर को भी सभी कहते हैं ना, उसके अंदर पार्टी के लोग भी कर रहे हैं. अनफॉर्चुनेटली दैट्स द फितरत आपके of our Pakistani, and it's our nature, and it's embarrassing, but I am clean.
I want to work with देखिए everybody. मुबीन साहब आपने हाइपर नहीं होना, ऐसे इल्जामात तो वैसे शहरियार अफरीदी पर भी है। जो बातें की देखो ना, rather than to congratulate me, वो I will असल में congratulate the losing team. आप देखे उसका जो रवैया था। मैं उनके गम में भी बराबर का शरीक हूँ, क्योंकि वो भी उसको गम तो है ना। एक हफ्ता 2 हफ्ता उनको भी आप टाइम दें कि वो थोड़ा रिलैक्स हो, थोड़ा वो अपने माइंड में आ जाए, क्योंकि वो अभी शौक में है कि हमने मतलब 10 साल से उनकी वो हुकूमत मैं कहूंगा कि आ रही थी यहाँ पे, वो लोगों को पागल बना रहे थे, लेकिन अभी तक उनके हाथ में नहीं ऐसा ना बोलें यार, पागल किसने ये साल तक उन्होंने यहाँ पर रूल्स किए। इदरीस भाई यार आप क्या ऐसा कह ना रहे हैं? बोलें, वो हमारे ये यहाँ आप ऐसा कौन से खिलाफ क्यों बोलते हैं? कौन नहीं, आप किसकी बात कर रहे हैं? नहीं, जिसकी आपने बात की वो किसने आपको पागल बनाया? ये 10 साल तक लोगों को यही कहते रहे, 122 वोट पे 50 वोट पे ये यहाँ पर कहते थे हमने पीटीआई। साहिर साहब देखें, मैं साहिर साहब ये देखें, आप जो बात कर रहे हैं कि पागल मतलब बनाते रहे, तो ये अवाम है जो पागल बनती रही। मतलब हमें दूसरी तरह भी सोचना चाहिए, अगर हम इतने बाशऊर हों तो हम पागल बने। नाउ थिंग्स आर चेंजिंग, अब चीजें बदल रही हैं। देखिए मैं कुछ और कह रहा हूँ। देखिए वसीम भाई, मैं यही कह रहा हूँ, मैं असल में मुबीन साहब से यही बार बार पूछ रहा हूँ कि आप क्या अवाम के लिए आप क्या कर रहे हैं, जो ओवरसीज है उनके मफाद के लिए आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि हर साल ये मेंबरशिप बनाएंगे, हर साल यही करेंगे। तो उन्होंने जवाब दिया कि वो एक नए एजेंडे के साथ आए। ठीक है, तो अगर आप बात करें तो ऐसे तो यार अफरीदी पर भी इल्जाम लगाया गया है, लेकिन वो नहीं मान रहा। ये अलग बात है, वो अभी कह रहे हैं कि मुझे वोट डालने का तरीका नहीं आता था, और वो उस पर इल्जाम। लेकिन फिर आप ये देखें ना, दिस इज अ वन टाइम अपॉर्चुनिटी। वोट जो डालना था वो वन टाइम अपॉर्चुनिटी। आपका मतलब अगर मैं जाऊं कोई फाइनल एकेडमिक पेपर हो तो आप तैयारी करके नहीं जाएंगे। जो गलती है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, खुश मतलब ये जवाबमर्दी है, ये एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि यस आई वाज रॉन्ग, मुझसे गलती हुई है, बजाय इसके कि जिद पे आके और हम मतलब किसी बेबुनियाद चीज पे अड़ जाएं और बाद में कहे कि मुझसे गलती हुई, ये भी कोई बात हुई? ये गलत है। ये जो गलती है वो गलती है, एक्सेप्ट करना चाहिए। जी 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 जी। You know, whatever is gonna happen will happen. The election has been decided. However, it was prepared, and you know, it's up to Mubin Sam to bring the whole camp together. There will be some people who are not happy, and you know, they have an option to Mubin Sam, जी Mubin Sam, do you have any timelines for specific time? मतलब कि आप इस टाइम ड्यूरेशन में ये काम करेंगे, कोई टाइमलाइंस आपने डिसाइड की हुई हैं? देखें, as you can see at the moment, we've got a major problem with COVID, right? There's very little we can do other than through social media. So hopefully we'll get a better direction next week by the government about the situation with COVID. सबसे पहले I want to hold a major function in Middlesbrough, whereby I intend to invite all parties, which includes Nazati and Pak Watan, though they are all PTI. And that will be a sign of my thinking that we're all one. And we will have a debate, we'll ask questions, we'll try and ask people what are the typical problems. मेरे दिमाग में तो बहुत सी हैं और उसके हल भी मेरे ज़हन में हैं, but I'm not wanting to be one man show. I want to be a listening president. I'll ask everybody and take a consensus on some of the issues. I'm aware that we've got problems when our generations, our future generations, our children are moving away from Pakistan. They find other destinations for their holidays and to visit. And there are ways I want to sort of change that perception. We have legal problems. We've got people taking over our property in Pakistan, our own family members doing that. And we, as overseas Pakistanis, we get frustrated because the locals know only too well that I am in Pakistan mein 2-4 hafte ke baad bhag jayenge, kyunki we have our families living in UK. We have our work here in UK, which we can't leave for long periods of time. And you know, I already started making noise over 6 months ago कि ये जो मसला है इसको एड्रेस करना पड़ेगा. इसको एड्रेस ऐसे ही हो सकता है कि we set up some sort of legal wing here
either at the consulates, all the consulates, or just at the High Commission office. Front desktop. And deal with through Zoom. Mubin Saab, Some sort of front desk. These people should be in your back pocket, as Brother Maruf said. Well, Brother Maruf has them in his pocket, so we'll have to try and take them out of that, right? No, nobody's anybody's back pocket. The government is an authority in itself. We have to approach them in a way that is right and proper, in a proper manner. It's naive of anybody to think that he's got them in their back pocket. That is an insult, and it's not the right thing to say. Right, we will go and. To him, I think he said it in jest. Yeah, I think so. He said a banter. Maybe he didn't think, but no, I know he didn't mean it. I think I'm sure deep down he didn't mean it. Right, so let's not use that in today. That's one of the things we want to address. No, and I believe this is your opportunity to offer an olive branch to the other party, the other panel rather. And as I said, the panels are now dissolved. But I think those people that are on the fringes of PTI Northeast, I think this is your opportunity to offer an olive branch this evening and bring them into the fold. Yes. and work with them to take the party forward. Well, absolutely. And our constitution allows for that, because these people have worked very hard. They, after all, brought 485 votes, maybe more, because some of them naturally, through one reason or another, won't have voted. So they've got 500 plus members. And they do have a right to be part of the committee that I'm going to form, 30-man committee. So naturally, we will be inviting them. Those who are keen and are willing to work, and I'm convinced, and most of them are, because they're all my friends. After all, these elections have taken place, I believe, in a good manner, with the exception of one or two people. And I will unite them, and the only way to unite them is to get them involved. Right? Okay, करते हैं एक दो कमेंट भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं. तो सूफी अब्दुल करीम अली साहब कह रहे हैं कि जाग गया है नॉर्थ ईस्ट. वाह जी वाह. और उनका फॉलोअप कमेंट है, वी आर ऑल यूनाइटेड फॉर पाकिस्तान, वी आर ऑल पाकिस्तान यूनाइटेड फॉर पाकिस्तान. माशाल्लाह, बहुत अच्छी सोच है इनकी. तो अली भाई, आपका शुक्रिया. तो एक और भी कमेंट है सार अली के बारे में. वो कहते हैं, तो ये मैं हमारा प्रोफानिटी सिस्टम ने इन्होंने जो ब्लॉक कर दिया, जो अल्फाज इन्होंने लिखे हैं आपके बारे में. ये कौन है फेसबुक यूजर? आपके खिलाफ क्यों है? एक ही है, वन एंड ओनली. आपके खिलाफ क्यों है इतने? ये मेरे नहीं, ये उनके खिलाफ है जो इनके खिलाफ है यार. ऐसा ये इट्स लाइक हस्बैंड एंड अ वाइफ रिलेशनशिप. अली और साहिर का जो है ना, look, I'm not suggesting anything different. All I'm saying is जो टिट का टॉप इनका लगा रहा है. नहीं, ये किसी और नहीं, ये दूसरा कोई किसी ने कमेंट किया है. बहरहाल कमेंट जो भी करे, जो हकीकत है हम वो जी. ये कौन, ये क्या कह रहे हैं? इरफान अली साहब कहते हैं. इरफान अली साहब को मैं बताऊंगा. वो उन्होंने ना मजाक की उसमें किया कि जियो न्यूज, मतलब आप लोग इमरान खान के खिलाफ बोल रहे हैं. असल में मसला ये है कि अगर आप पीटीआई के उनको सिर्फ आप रास्ता भी दिखाना चाह रहे हैं, कोई उनको सही भी आप बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप जियो न्यूज है, उनके खिलाफ आपने बोलना नहीं है. अब इनसे मैं यही सवाल पूछना चाहूंगा. बेसिकली बात ये है, नहीं, एक मिनट वसीम भाई, बात ये है कि बीइंग एंकर हमारी ये जी मैंने कहा बीइंग एंकर हमारी ये कोशिश होती है कि हम जो पोशीदा चीजें हैं, जो पिन्हा चीजें हैं, तो उनको हम लेके सामने आए. तो वी आर नॉट अगेंस्ट एनी पार्टी. बेसिकली वी आर हैप्पी कि चलें मुबीन साहब इलेक्ट हुए हैं. हमारा ये प्लेटफॉर्म इसलिए है कि हम चीजों को उजागर करें. हो सकता है जो चीजें हम उजागर करें उनकी उस पे अभी तक मुबीन साहब का ध्यान ना गया हो, और लोगों के जिसके कमेंट्स आ रहे हैं ना. अब इदरीस भाई ने परसों एक अपोजिशन के प्रेसिडेंट को फोन किया, तो उसने कहा मेरे पास बिरयानी का ऑर्डर है. तो अब उसमें अब हम यार ये उसने नहीं कहा यार, ये एक हकीकत है. मैं बताऊं साहिब भाई, हकीकत आप सही कह रहे हैं, ये आप सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल आई एम एग्रीड जी. यू नीड टू अपोलोजाइज. उसने अच्छा, मैं दूसरी बात करता हूं. देखिए, 2 हफ्ता पहले आपको पता है वसीम भाई के वहां पे पाकिस्तान में पीटीआई के जो एमएनएस थे, एमपीएस थे, उन्होंने पैसे लिए थे. ठीक है, अब उसके वो कह रहे कि नहीं, ये गलत नहीं किया उन्होंने गलत किया हुआ है. ठीक है, ये गलत है. ठीक है, लेकिन बात ये है कि जो हकीकत है वो आपने बयान करना है.
बिल्कुल वो जो हकीकत देखें अभी मैं आपको बताऊं कि मुझे समझ नहीं आती कि जब आप विकेट के इस तरफ खेल रहे होते हैं तो करप्शन होती है, जब आप विकेट के दूसरी तरफ आ जाते हैं तो वो सब अच्छा हो जाता है। हमारे अपने ओपिनियन जो है वो चेंज हो जाते हैं। मतलब मैं पॉलिटिशियंस की बात कर रहा हूँ, स्पेसिफिकली पाकिस्तानी पॉलिटिशियन के बात, जब वो अपोजिशन में होते हैं वो करप्शन का रौला डाल रहे होते हैं। द मोमेंट वो सीट, अब सेनेट की सीट जिस तरह ये यूसुफ रजा गिलानी की सीट थी, जो हालात हुए हैं, जिस तरह की करप्शन या चोरी वीडियो पे लीक हुई है, उसके बाद भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो उस जिस तरह मैंने फुर्ती से बात मुजाहिरा नहीं किया जो कि करना चाहिए। जी, तो जहाँ तो सब चला वहां पे, सब जानते हैं, लेकिन अब वो सवाल जब है, अब नए ठीक है मुबीन साहब से एक सवाल है कि अभी तो आप माशाल्लाह आपने मेंबरशिप को बढ़ाया 1400 तक ले गए, ठीक है ऑल टुगेदर, तो जी जी आप क्या समझते हैं कि अगले साल मतलब अगले साल हो या 2 साल हो जो भी हो, क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी कि ये डबल हो जाएंगी या कम हो जाएगी? देखिए जी, obviously when the general public in the northeast saw that and hopefully through myself and my team we've created a great interest and we've got a big membership, and naturally these members expect some performance and some results. So they can, if we perform and achieve the results, then I don't see any reason why we can't get an increase. लेकिन ये भी आप सोचें कि अल्लाह का फजल है, हमने जो ये एफर्ट की है, और I must say that Nazariati has always pushed us to the limit. I was always confident that through our efforts and through my my family standing in the northeast, it was going to be difficult for them to beat me, but I'm pleasantly surprised, and I think there's a lot of interest generated in the area, and I can see that hopefully we should increase the numbers. As to by how much, I don't know, because I think we've worked extremely hard. Let's hope we produce the results and people are not disappointed in us. So if that is the case, then I don't see any reason why we can't. So, Mubin Saab, what's the first thing you mentioned about organizing some sort of a function and एक और bringing? चीज जी साहब, एक और चीज कि ये सिर्फ मेंबर्स के लिए ही सोच रहे हैं या बाकी आम आवाम के लिए भी? वसीम साहब, you अच्छा सवाल है। forgotten my interview. मैंने उस वक्त भी आपको कहा था कि Yes. I'm going to help every Pakistani, no matter which political party they support. I've told you, but basically, I'm not a big politician. I'm passionate about Pakistan, and that comes to me first before any political party. And as it happens, I'm a great believer of Imran Khan, and that's the platform I've used, perhaps to try and help our overseas Pakistani community living in UK and in particular in the Northeast. So my doors are open for everybody, whoever distance, whether it's Nazariati, former Nazariati people, whether they like me or not, I will not take it personally. I will help everybody. That's a great, thank you. So, Sari, we are almost out of time. I think we're going to wrap up our conversation. I think we'll be just taking a couple of more comments in, and Sufi Karim Ali Saab is very proactive within this particular comment section. It's a great platform for the community discussion, CVFM Radio. Thank you, Ali bhai. और एक लंबा चौड़ा मैसेज है, इसने क्या लिखा, ये कौन है और कहाँ से? वही है ना जो क्या बोला था आपको कि ये हमारे जी नहीं ये तो नासिर भाई है, आई थिंक तो काइंडली अपना कम से कम नहीं, अभी इंशाल्लाह इस पे ऑप्शन लगाएंगे, जिसकी तस्वीर नहीं होगी उसके कमेंट नहीं ये तो इन्होंने तो ग्रुप में मैसेज किया, sometimes if you haven't given permission, तो आपने तो बिरयानी वाला मेंशन किया था, तो आपने ज्यादती की, अब आप अभी अपोलोजाइज करें। नहीं बहरहाल मैं नहीं आप अपोलोजाइज करें कि उन्होंने काफी कुछ मुस्तफियात की वजह से नहीं आ सके, तो आपने बिरयानी, उन्होंने कमेंट किया पहले, वो उसकी अपॉलॉजी करे, उसके बाद मैंने ये कि मैंने पहचान लिया। नहीं आप बिरयानी कहाँ से लेकर आए? अच्छा मैं ये साहिर भाई बिरयानी मिस कर रहे होंगे, साहिर भाई खुद मिस कर रहे होंगे बिरयानी को, कर देते हैं। मैं जी मुबीन साहब आपसे एक सवाल है, आपकी नहीं है, ठीक है, मतलब आप
पहली दफा एज अ प्रेसिडेंट आ रहे हैं, आपके साथ अब्दुल हसीब है, वो भी पहली दफा आ रहे हैं, सिस्टर शबाना है, इफ्तिखार है न्यूकासल से, साथ में एडिशनल सेक्रेटरी है सादुल्ला खान और हमारे जनरल सेक्रेटरी शफीक शबीर। पूरी टीम नई टीम है, तो क्या आप लोग अपने जो आपके एजेंडे हैं उसको मतलब अचीव कर सकेंगे? Maybe in PTI. Let me add something in it, the please. Northeast. Khan Saab. Sorry, Wasim, just hold on a second with your thought. Let Mobeen Saab finish his comment, then I'll come back to you. I may have come for the first time as the president of PTI, but I think myself and my family has been involved in community work for generations, and going back more than 5 decades, in fact 6 decades. So in that sense, it's nothing new, right? I'm only, and those who know me, and they are the ones who've actually voted for me. They know my ability and the help I've extended and my father in the past to our local community. So in that sense, I'm not new. I'm more experienced than anybody else. When it comes to PTI, I think you all well know my reasons for being not too deeply involved in at the Northeast level, though when the PTI has always been at the bottom of my heart. And I've known Khan Saab, our Prime Minister, since 1993. So I'm a great believer in him and in his cause. And I don't want to blow my own trumpet, but I've had a 2-hour discussion during a drive between me and Khan Saab in 93 when I asked him and I requested that he should go into politics and sort out the grassroots problems in Pakistan and right from top to bottom, which is polluted with corruption. And I'm not saying that he took this decision just on my say so, but I'm sure there's many other Pakistanis who sort of saw him as the natural leader who could take us out of corruption and lead us to what we all aspired as Pakistan and our great Qaid-e-Azam's vision. माशाल्लाह। तो वसीम साहब, मैं बिल्कुल साहिर साहब का जो क्वेश्चन था उसी हवाले से मैं थोड़ा सा एलैबोरेट करना चाह रहा था कि खान साहब जो कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है, उनकी भी इस दफा टीम सारी नहीं थी और पाकिस्तान ने पिछले 3 साल में जो हालात हुए हैं, देयर इज अ डिफरेंस इन प्रैक्टिकल एंड थ्योरी। तो जो आपकी भी माशाल्लाह से टीम नहीं है, तो हाउ डू यू सी दैट कि वो खान साहब की भी टीम नहीं थी, आपकी भी टीम नहीं है? अभी 3 साल जो पाकिस्तान में हमने देखे हैं, दैट इज वेरी टफ। देखें, unfortunately for Khan Saab, Pakistan over जो पाकिस्तानी हैं in Pakistan and Pakistanis who are overseas Pakistanis, there's a big difference, right? I'm sorry to say that the same Pakistanis out of Pakistan are much better people. They are less corrupt. There's a lot of talent here. We love Imran Khan, and generally we all recognize that the true leadership in Pakistan is that of Imran Khan, and he has a major following in UK and overseas, and that's one of the reasons. And another thing that I'm going to try and fight for is with my UK members, whether I'm part of it or whether through my Northeast hat as a president, we need to tell Islamabad that you need to have somebody from overseas to represent and be in the government, because after all, it is the overseas Pakistanis themselves that really and truly know what the problems are. So ek to ye hoga, dusra ye hai ki I believe that any people that we take from overseas, or most of them at least, are genuine, and they will be a true asset and support for Imran Khan. I think they got Zulfi Buhari and someone else already at these positions. मैं यहाँ पर थोड़ी क्लेरिफिकेशन कर दूं। मुबीन साहब की जो वो ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ से हमारा अपना रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, क्योंकि जुल्फी बुखारी वो तो है, वो ठीक है, लेकिन वो पाकिस्तान से यहाँ पर आते हैं, फिर वो कभी उधर होते हैं, कभी यहाँ पे, वो बिजी होते हैं, वो किसी का फोन तक नहीं उठाते, जो सही बात है। उसका पीए ने फोन नहीं उठाया। शुरू में तो सारे यही कहते हैं, शुरू में तो सारे यही कहते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम
एग्जैक्टली सब बात है, गायब हो जाते हैं। ठीक है। बहरहाल खान साहब को अल्लाह साहिर साहब लंबी एक और मैं मौका देता हूँ आपको, नहीं मैं ये नहीं, बिरयानी नहीं, वाली कमेंट विड्रॉ कर ले। नहीं विड्रॉ नहीं करूंगा, वो मैं उसके साथ उधर जाके विड्रॉ करूंगा, उधर नहीं, जाके तो ये आप जब तक खाएंगे नहीं, उसके रेस्टोरेंट में जाके मैं बिरयानी भी खाऊंगा इदरीस साहब जब तक ये खाएंगे नहीं तब तक ये विड्रॉ नहीं करेंगे। नहीं विड्रॉ नहीं करेंगे, सिर्फ जब खाएंगे। तक खाएंगे नहीं विड्रॉ नहीं करेंगे, कोई मसला नहीं। अच्छा, मैं यहाँ पे छोटा सा मैसेज ये दूंगा कि खान साहब हमारे लिए भी मोहतरम है, वो अकेले चल पड़े हैं, उनके साथ जो टीम है मतलब उनमें से भी कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरी पार्टियों से आए हैं, तो सारे एक जैसे नहीं हो सकते, सारे दूध के धुले नहीं हो सकते। बहरहाल हम दुआ यही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उसके साथ जो टीम चल रही है वो भी उसके नक्शे कदम पर चले। बस मेरी ये एक छोटी सी मैसेज, छोटा सा मैसेज मैं आप लोगों को देना चाह रहा था। जी, so this is from explanation from brother Nasir bhai, and I said it the other day on the program that he gave his apology. He had a family commitment and he wasn't able to attend. So I apologize on behalf of Syed who misquoted me and mentioned biryani. And नहीं बिरयानी तो नवाज शरीफ को mention करते हैं यार। नहीं आप बेसिकली इदरीस भाई इनका अंदर से दिल पाकिस्तानी है। जी इदरीस भाई इनका अंदर से दिल वो बिरयानी और नान वाला है, साहिर भाई का बेसिकली। नहीं ये वैसे मजाक कर रहे हैं तो मैं भी मजाक कर रहा हूँ। ऑन अ लाइटर नोट, आई एम जस्ट किडिंग ऑन अ लाइटर नोट कि साहिर भाई मोहतरम है हमारे लिए, जस्ट टू ईज द सिचुएशन। So despite being in a new team, they've got 1,400 new members, and there's proof that इसको mention a lot of good work. इंशाल्लाह देखते हैं आगे क्या करते हैं मबीन साहब। इन्होंने तो अपनी तरफ से जितनी कोशिश की वो उन्होंने की। जी अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो आप भी चलो ये सवाल आपसे ऑन एयर नहीं पूछूंगा। So Mubin sahab, last word from you, and then we're gonna wrap up the show. And it's you have 30 seconds to give your final message to your voters, to your party members, to our community members. First of all, I thank you all again for supporting me. I realize there's a lot of expectation on me and my team to deliver, but I cannot do this on my own. I need you people with me. I need everybody's cooperation, and inshallah, we'll do our best, and only time will tell. But there will be no lack of effort from me, and those who know me know that too well. And let's hope we can put our differences aside and work together. My team is already there, but there is going to be a committee of 30 people. And those who are interested and have a cause and firmly believe that they want to be involved, we will, and of course we will welcome them. And for PTI in the Northeast, I've already stated in the past that I will have meetings and I'll have in different parts of Northeast where I'll hold 2-3 hours of sessions for people who need my help. Where I am not able to help, I'll have a team of 30 people, of professionals. We'll have lawyers, we'll have possibly tax advisors, we'll have doctors, we'll have accountants, business people. So any bank problem they've got, whether they are to Pakistan or at the local level, we are happy to help. Okay, so will there be any bankers for a business loan? Well, I'll introduce you to a few, okay? And then it's up to you to convince them. Mubin sahab, thank you so much for your contribution. Sarfaraz naam ne kya kiya? Congratulations. किसको दे रहे हैं मुबारक ये? नहीं, ये असल में मुबीन साहब को दे रहे हैं कांग्रेचुलेशन। सरफराज कयूम जो था वो भी अपोजिशन में था, एडिशनल सेक्रेटरी था मेरे ख्याल से। नहीं यार, यहाँ कितने सरफराज हैं। तो before we wrap up, I want to give सरफराज है। So before we wrap up, we're going to go to वसीम भाई। वसीम, आपका अपना पॉलिटिक्स शो भी आ रहा संडे को, उसके बारे में थोड़ा हमारे नाजरीन को बता दें कि किस टाइम और आ रहा है। ये जी संडे को 6 से 7 है और इस दफा काफी गर्मा गर्मी रहेगी क्योंकि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में जो सेनेट इलेक्शंस का जो रिजल्ट था वो दैट वाज अ टोटल अपसेट, और खान साहब ने उसी की बेस पे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो कल सैटरडे को ले रहे हैं
पार्लियामेंट से। सो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, बहुत सारे ओपिनियन मेरे साथ ओपिनियन मेकर रहेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ डिफरेंट पार्टीज, जो कि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में काफी, पाकिस्तान से भी कुछ लोग मेरा साथ देंगे, तो काफी इंटरेस्टिंग वो शो रहेगा। इट्स गोना बी ऑन संडे फ्रॉम 6 to 7 और आप लोगों के कमेंट्स का मुंतजर रहूंगा। इसके अलावा इदरीस साहब और साहिर साहब, थैंक्स अ लॉट कि आप लोगों ने मुझे अपने पैनल का हिस्सा बनाया, एंड आई विश हिम मुबीन साहब के गुड लक आने वाले वक्त पे, ताकि जी 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 So, आने वाले वक्त पे साहिर भाई मुबीन साहब को बेस्ट विशेस कि वो हमारे लिए बहुत पॉजिटिव साबित हो। Jazakallah. So do remember to tune in to Osimai's program Sundays 6 till 7 live here on the CVFM radio platform. So Said Saab, your final opportunity to apologize to brother Nasir. नहीं वो तो है ही नहीं ना, वो फेसबुक यूजर है, फेसबुक यूजर को मैं नहीं वो नासिर भाई यार, नहीं मुझे नहीं पता वो कौन है, मुझे क्या पता नासिर कौन है। बिरयानी खाएंगे फिर बिरयानी, हाँ बिरयानी खाएंगे फिर बात करेंगे। नहीं बाद में अपोलोजाइज करेंगे, नहीं बाद में, हाँ बाद में बिरयानी। नासिर भाई थैंक यू सो मच। जितने भी हमारे जानने वाले थे, ये कौन है? मकसूद, ये मकसूद भाई है शायद, मकसूद हुसैन जी लंदन से है, कहाँ से है ये मकसूद? should appoint a representative from UK and the government। बिल्कुल मकसूद भाई, यही बात हो रही थी, मुबीन साहब भी यही कह रहे थे, और हमारी भी ख्वाहिश है कि यहाँ से कोई रिप्रेजेंट करे, और वो रिप्रेजेंटेटिव हमें चाहिए जिस मतलब उसको एक्सेस हो टाइम टू टाइम आपसे वो कम्युनिकेशन, ताकि जिस तरह यूके में इनका होता है कि काउंसलर आपके साथ होता है, मेयर एनी टाइम आपके लिए अवेलेबल होता है, तो इस तरह का रिप्रेजेंटेटिव हमें चाहिए। तो इंशाल्लाह कोशिश हमारी होगी, बाकी देखते हैं कि आगे क्या होता है। बहरहाल मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, और thank you so much for watching and bearing with us. Apologize if we hurt anyone's feelings. आपने लिखा है फ्राइडे नाइट गपशप, बस खत्म बात। Sincere apologies if we upset anyone for any reason. And as I said, brother Nasser, I didn't say any of those words. So if you need to pull up anyone, it's brother Sair. I know he's your good friend as well. So you have this relationship where you can have this banter between you. So yeah, he is waiting for a biryani and then he will apologize. So no, the jokes aside, thank you so much for your comments, your contribution to the program today. And this is our new studio. And inshallah we'll be making more use of this in the coming weeks. रमजान के दौरान कोई इरादा है प्रोग्राम का? इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा, तो so डिफरेंट प्रोग्राम्स है ना, वसीम के साथ भी डिस्कस करेंगे उसको। वसीम भी कुछ प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, जी इंशाल्लाह हमारी तरफ से होगा, तो कम्युनिटी को इंशाल्लाह हम अपना जितना भी जी वो टाइम देंगे जरूर, 50% तो जरूर देंगे। जी। So thank you for watching, and it's have a safe Friday night and a fantastic weekend, whatever you're doing, and inshallah we'll be back again with another program.